So we have another question from Fiza, that is, when someone angry on you without any reason but you give a response in positive way, that's also called positivity? ओके, सबसे पहले मैं अफशान का जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करना चाहूंगी। एक तो जो लाइक रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन वर्क प्लेस, पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज अ वेरी बिग रोल in workplace. Like when we are designing our management plan or therapeutic plan, whatever you called it, we use an eclectic approach. Eclectic approach means like we integrate many therapies and we move towards our client. See, so when we have a client with a very negative attitude in his life, like we have a depression based client, let me take an example. So how to make her or him positive in his life. So when we are planning this thing, okay, how to make someone positive, this is how we are integrating positive psychology in workplace. See, और देखो अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। अब जैसे हम कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली लोगों को उनके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स नहीं पता होते। ये इस पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इट्स डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट। जो भी आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उन पे आपने किस तरह से काम करना है। जब आप ये चीज देख रहे होते हो तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की काफी सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, लाइक फॉरगिवनेस की टेक्निक्स यूज होती हैं, रेजिलियंस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। रेजिलियंस इज बेसिकली your ability to bounce back, how you respond in tough times or in times when the things are not going in the way you want it to go. So resilience के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद रिलीज रेजिलियंस बेस्ड थेरेपीज हम डिवाइस करते हैं, ठीक है। उसमें आप जब थेरेप्यूटिक प्लान डिवाइस कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि लाइक आपने अपने रेजिलियंस को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए जो आपके जो मतलब कंपोनेंट्स आप उसको कह लो, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिस पर काम करना होता है, ठीक है। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपकी फैमिली, उन चीजों पे हम देख रहे होते हैं कि आपका क्लाइंट कहाँ लाए कर रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर पे काम करने की जरूरत है कि उसका रेजिलियंस का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, ठीक है। बेसिकली इस रेजिलियंस जब आप देखते हो ना तो उसमें एक ग्राफ की शक्ल में आप सिनेरियो देख रहे होते हो कि कितना स्ट्रेस लेवल वो बंदा उसको बर्दाश्त कर पाता है, ठीक है। और कौन सी चीज है जो इतना ज्यादा उसके लिए ट्रिगरिंग हुई है कि वो एक फॉल डाउन का शिकार हो गया है, वो मतलब लड़ाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो वहां पर काफी चीजें जो है ना आपको देखनी पड़ती हैं। सेकेंडली मैम, व्हेन आवर ओपोनेंट इज, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था। अच्छा अफशा, आई थिंक योर क्वेश्चन हैज बीन जी। आंसर्ड। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सेप्शनल आंसर, बट स्टिल मेरा जो पॉइंट था ना क्वेश्चन का वो ये था कि फॉर एग्जांपल हम लोग वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। ये तो मैम अपने क्लाइंट्स की सूरत में मतलब बता दिया कि किस तरह से हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ कि एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट है जो कि हमारी फील्ड से हटके एंड वी आर वर्किंग देयर एज अ कोलीग, जो हमारे कोलीग्स हैं उनमें हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो हाउ कैन वी अप्लाई पॉजिटिव साइकोलॉजी देयर इन दैट सिनेरियो? ओके 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 ओके, या अच्छा इट्स जस्ट अ डिफरेंट क्वेश्चन, और जो मैंने आंसर किया उससे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल सो द डिफरेंट। थिंग इज, Interrupted because you were answering, so I was glad to hear that as well. But still, my question is this. ओके ओके, अच्छा आप बेसिकली वर्क प्लेस रेजिलियंस की बात कर रहे हो, और आप बात कर रहे हो कि हमें जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है, यहाँ ऐसा जी। इन्वायरमेंट जिसमें हमें जो है वो, अच्छा हम टॉक्सिसिटी की भी बात करेंगे इसको एंड ऑफ सेशन में। सो जस्ट मी आई मूव ऑन, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह से हमारा सेशन जो है ना वो ज्यादा इंटरप्ट हो जाएगा। जस्ट कीप दैट क्वेश्चन शीमा, वी Okay. विल मेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, और कोई और भी क्वेश्चन है तो फिजा प्लीज उसको यूनिस मार्क। का सेकंड क्वेश्चन ये मैं मार्क कर लेती हूँ अपने पास, फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ सेशन बता दूंगी। हाउ इज इट दैट? हाँ, I will keep 5 minutes for these questions. I will answer them. Inshallah, you will get your answers with this at the end of the session. Okay? So just we move on towards our next slide. That are human virtues. There are 6 virtues, core aspects of human excellence that help him um,
we are going to answer the questions at the end of the sessions. Okay, so please keep your questions. आप यहाँ पर question enter कर दें. We'll going to answer that. Seema, please keep that questions. So I'm going to answer them at the end of the Okay, session. okay, I will Okay. have that. Okay. Okay. Jazakallah. Human virtues. What are human virtues, and why we should keep them, and basically, human virtues are core aspects of human excellence that help him to survive and thrive. So, there are many people in this workshop who want to know, like, how we have to respond in a positive manner in a situation where things are not going in our way. So, the thing is, you have to find out your virtue. What are your strength? What are your basic uh, thing, or what are your basic like आप कह लो उसको your core, your identity. ठीक है, how you have to work on your identity, you can call it as identity. So the thing is, wisdom and knowledge, humanity, justice, courage, temperance and transcendence. So first thing that we have to know is wisdom and knowledge. The people who have more wisdom and who opt for more knowledge are more able to respond better in a situation that are not going in their way. Like, एक तो आपके पास नॉलेज ही ना हो ना किसी चीज की, अब ऐसी कोई चीज आ गई जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर जस्ट, मतलब लाइक आप कुछ भी नहीं करोगे, यू आर जस्ट लाइक ब्लैंक, यू आर जस्ट, आप कह दो कि up, you have no weapons to attack. So first you have to acquire knowledge, you have to make yourself uh, uh, a good person, a good person in a sense. You have to work on yourself, you have to um, expand your knowledge, your wisdom. For this you have to um, work, you have to learn, you have to stay open minded. Open minded आप किस तरह से रहोगे, you have to observe things in a different way, you have to challenge your perspective. Like if somebody is saying you that the sky is pink, you have to see that sky in his viewpoints. It's not like what we think is right. So when we are thinking like I think the sky is blue, so the sky is blue. No, you have to see someone else's scenario, someone else perspective too. So this is basically how you have to stay open minded. So the first thing we have to work to combat a situation that is not as good as we want it. Humanity. Humanity is like being kind, being like loving, and being socially intelligent. Socially, what is social intelligence? Social intelligence is human virtues. I have defined it. Human virtues are basically core aspects of human excellence that help him to survive and thrive. Your aspects, your qualities that keep you alive, that keep you uh, Walaikum salam, that keep you working towards a good life. Okay, sorry for the interruption. Okay, okay, we just move towards next virtue, justice. Justice is, as you know, like how we have, how you can work in a team, how you can stay fair with other people, and how to opt leadership. Balloon experiment, sorry to okay, balloon experiment, I can't explain that again. I just want to finish that workshop first, finish my points first, then I'll explain that. If I keep explaining things again and again, so the time limit that we have will end. So sorry for that. ठीक है, I hope you understand. Just it's
जी मैं देती हूँ ओवरव्यू, लेकिन जस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके ओके। सो द जस्टिस, उसके बाद आते हैं करेज पे। करेज क्या होती है? आपका इंथुजियाज्म, आपका किसी चीज को कितनी आप जो है ना इंटेग्रिटी से किस चीज को लेके चल सकते हैं, ब्रेवरी, परसेवरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम टेम्परेंस पे आते हैं, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। फिर ट्रांसेंडेंस पे आते हैं। अच्छा देखो, ये जो 6 वर्च्यूज हैं, इसमें से कुछ ना कुछ हमारे अंदर जरूर है, ठीक है, कुछ ना कुछ हर बंदे के अंदर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिस पर काम करने की जरूरत है। जिस पर काम करने की जरूरत है वही वो चीजें हैं जिसको अपनाने से हम अपना रेजिलियंस लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइक देखो, हम अगर कुछ इस ऐसे इन्वायरमेंट पे हैं, इफ वी आर इन एन एनवायरमेंट वेयर द people are not in our way, or people are not like so much appreciating, people are toxic, just we say toxic, they are judgmental, they are more like narrow minded, they are, they have not that good qualities that we have ever imagined. So हम किस तरह से उनको फिर लेकर चलेंगे? हम अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएंगे, अपने रेजिलियंस लेवल को बढ़ाएंगे, ताकि हम उनके व्यू पॉइंट्स को समझ पाए, ठीक है। if a person is more like more critical to you, it means he or she is suffering in his life, he has some mental disturbance. So we have to understand this, like no one is, हम ये नहीं कह सकते कोई भी इंसान ना बिला वजह रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होता है। जस्ट हमें ये समझने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी क्वालिटीज हैं वो हमारी क्वालिटीज हैं। कोई अगर हमें वो अगर ये कहता भी है कि नहीं, वो जजमेंट जो है अच्छी पास नहीं कर रहा, वो हमारे पर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उस पे वो लो है, ठीक है, उसका सेल्फ एस्टीम लो है। वो अपनी सेल्फ कंट्रोलिंग, एक जो आप कह लो एक अर्ज होती है कंट्रोल, तो एटीट्यूड होता है, वो उसका अपना लो है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर वर्च्यूज एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू चेंज, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, आवर एटीट्यूड। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं हु डेवलप्ड दिस concept of positive psychology, who worked on it. If you ever know about this positive psychology, so you have ever uh, witnessed this name, that is of Martin Seligman. Martin Seligman was the first person who worked on this concept of positive psychology. उनके साथ साथ क्रिस्टोफर पेटरसन एंड मिल्हे सीजन ने भी काम किया, ठीक है। फिर जो हमारे पास लेटेस्ट रिसर्चेज आती हैं वो बारबेरा फ्रेडरिक्सन की आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्चेज हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना प्यारा काम किया है पॉजिटिव साइकोलॉजी पे। और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पास हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारे पास है पेमरा मॉडल, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि देखो, if you want to stay positive, you have to work on your positive emotions. And what are these positive emotions? These are basically happiness, joy, gratitude, forgiveness. These all are resilience. These all are positive emotions. So, uh, when we talk about PAMRA model, it is basically about having positive emotions, engagement, relationships, meaning, and achievement. So, if you are more if you are experiencing more positivity in life, more positive emotions in your life, you have more engagement in your life. What engagement mean? Engagement mean you have more meaningful life. As I have explained previously, what is meaningful life? So the same concept will come here. More positivity, more engagement, you are able to communicate more with people, your relationship will be better, and finally you have more meaning and more focus in your life towards the achievement. You will achieve more. This is the PERMA model of
पॉजिटिविटी और पॉजिटिव साइकोलॉजी आप इसको कह सकते हैं. Secondly, a very important concept that is given by okay, we are going to answer the question at the end of the session. Okay, Hafsa, if am I right? Okay, next the concept is about Hafsa. Acha, broaden and build theory of positive emotions. Broaden and build theory of positive emotions. Broaden and build theory is a very amazing theory, and it's given by my favorite psychologist, Barbara Fredrickson. So, I don't know about the slides, why they are not shared. Basically, these are shared to you through this webinar. I guess that is why they are not shared. Okay, so broaden and build theory. Broaden and build theory is basically broadening your emotions, broadening your strengths. Okay, so from the time being we are talking about resilience. यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो resilience के बारे में जानना चाहते हैं. कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग हमारे साथ अच्छे ना हों या फिर हमारा कोई कसूर भी ना हो और ऐसे environment में हमने कैसे काम करना है. So this is the theory for you people कि आप इसको समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से जो है ना ऐसे situations पे काम करना है. So this theory is about working towards your positive emotions, so making them so expanding these emotions in a way that you are better able to understand your own feeling. When you are able to, when you build yourself, so this is like you are just आप एक सीड लगा रहे हो. ठीक है, सीड किस चीज का लगा रहे हो? पॉजिटिविटी का अपने अंदर. और उसको फिर आस्ता आस्ता आप उसको जो है ना पानी दे रहे हो और उसको बड़ा कर